Hello. So I'm looking for buy opportunity in Nifty, scalp buy. My stop loss would be say 715, and I'm looking for this buy opportunity when Nifty comes around 740 levels, or even say 725 levels or 730 levels. So range from 725 to 740, and my stop loss will be 715. Very small stop loss, probably 10-15 point stop loss, and my target would be somewhere around 800. I'm expecting that to happen after 2. Till then I think it should be sideways. If this stop loss is hit, I'll probably look for one more trade, which is buy at too close. Stop loss will be too low. Not trading Reliance, not trading बैंक निफ्टी. मैं निफ्टी में बाय स्कैल्प बाय अपॉर्चुनिटी देख रहा हूँ जब अगर कैंडल 725 लेवल्स के बीच में, 725 से 740 लेवल्स के बीच में आती है. मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 715. बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है, तो अगर वो हिट हो जाता है तो मैं एक और ट्रेड देखूँगा बाय के लिए. वो रहेगा 2 o'clock क्लोज के बाद. स्टॉप लॉस रहेगा 2 का लो, और टारगेट रहेगा 800 के आसपास या उसके भी ऊपर. मैं बैंक निफ्टी और रिलायंस ट्रेड नहीं कर रहा. थैंक यू.